Good morning, student. We will begin with lecture number 24, simple stresses and strain. Topic, numerical on stresses in composite section under axial loading. In the last chapter, we have studied the theory part. Now we will complete with numerical part. Numerical 1 question. A steel tube 26 mm external diameter has a metal thickness of 3 mm. It firmly encloses a brass rod of 16 mm diameter. Calculate the safe load carried by the composite member if stresses in steel is 140 MPa. Also, calculate the deformation of 1 meter length of each metal, load shared by each metal. Take modulus of rigidity ES for steel 200 GPa and modulus of brass EB 100 GPa. This is the figure. We have the brass tube externally in the ring form and the complete red, externally in the ring form we have got the steel tube and internally the complete red is the brass rod. आप लेफ्ट साइड देखिए 25 mm एक्सटर्नल स्टील रॉड का है और 3 mm दोनों साइड्स थिकनेस है नीचे और ऊपर. तो अंदर जो है 25 mm -3 19 mm होगा और ब्रास रॉड का डायमीटर है 16 mm. दोनों की लेंथ 1 mm. तो ब्रास रॉड स्टील ट्यूब के अंदर इंसर्ट होता है. नेक्स्ट, solution. We have to determine this in 3 steps. First, we have to find the cross section area for the steel tube and the brass rod. In step 2, we will find the load on steel tube and brass rod, and then we will find the actual stresses. Then we will find the change in length. So here, step 1, determine cross section area of steel tube and brass rod. AS is area, cross section area of steel, pi divided by 4 d1 square minus d2 square. This is equal to pi divided by 4, 25 minus 19 square is equal to 378. जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल डायमीटर d है 25 और अंदर ट्यूब का इंटरनल डायमीटर 19 आता है. मैंने बताया था 25 में से 3 माइनस थिकनेस की एक बाजू से और दूसरी बाजू से और 3 माइनस, यानी 25 माइनस 6 19. ये d2 है, इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब. नेक्स्ट, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर ब्रास रॉड AB which is directly pi divided by 4 into 16 square. आप डायग्राम में देखिए, you will get the area is equal to 202 mm square. Now next, we have to determine load on steel tube and on brass rod. हमको पता है load is equal to stress into area. Load on steel PS एरिया है 378 और क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रेस ऑन स्टील 140. सो 378 इंटू 140 यू गेट 52.92 किलो न्यूटन. वैसे ही PB स्ट्रेस ऑन ब्रास, तो ब्रास पोर्शन है उस पर कितना स्ट्रेस है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 202 इंटू 148. ये सेफ लोड है, इसलिए जो सेफ लोड है वो कुल लोड लेते हैं एंड वी गेट इट 28.28 किलो न्यूटन. Number 3, determine change in length for steel tube, that is delta LS, and brass rod delta LB. Delta LS is equal to PS into LS divided by AS into ES. You substitute the value and
solve it. So 52.92 into 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट किया है किलो न्यूटन का. LS 1 मीटर है तो mm में कन्वर्ट किया है 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया 378 इंटू ES 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm². यहाँ पे सब एक यूनिट में mm में कन्वर्ट किया गया है, किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट किया है. By solving we get 0.7 mm. That is the change in length for steel tube. Similarly, delta LB change in length for brass rod is equal to PB LB divided by AB EB. So substitute the value and we get 1.4 mm as a change in length. Numerical 2. A steel tube with 40 mm inside diameter and 4 mm thickness is filled with concrete. Determine stress in each material due to axial thrust of 60 kN. Modulus of elasticity for steel ES is equal to 2.1 into 10⁻⁶ MPa, that is Newton per mm², and modulus of elasticity for brass EB is equal to 0.14 into 10⁻⁶ MPa, that is Newton per mm². Now this is composite tube. बाहर के बाजू से स्टील ट्यूब है, सर्कल में रिंग फॉर्म में दिखा है और अंदर पूरा कंक्रीट भरा है. अंदर पूरा कंक्रीट इसमें भरा है. डिटेल्स और देखते हैं. इस प्रकार से डिटेल्स हैं. बाहर स्टील ट्यूब है, एक्सटर्नल डायमीटर 48 mm, अंदर कंक्रीट है 40 mm, थिकनेस 4 दोनों बाजू से. ओके, so 40 plus 4 plus 4 48. Now this is the diagram. Now we will find the solution. Axial thrust is 60 kN, that is 60 into 10⁻⁵. External diameter 48 mm. ES is equal to 2.1 into 10⁻⁶. EC is equal to 0.14 into 10⁻⁶. Now solution. फर्स्ट यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है. क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के बाद हमें स्ट्रेसेस निकालना है. फर्स्ट वी विल डिटरमाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील ट्यूब एंड कंक्रीट फिलिंग. एरिया ऑफ स्टील ट्यूब AS is equal to pi divided by 4 into D1 square minus D2 square is equal to pi divided by 4 in bracket 48 square minus 40 square is equal to 552.92 mm². Area of concrete AC is equal to pi divided by 4 into 40 square is equal to 1256.63 mm². This is as usual the part of geometry which we have seen in the figure. बाहर का ट्यूब एक्सटर्नल रिंग है, वो स्टील ट्यूब है, उसकी एरिया निकाले, और अंदर पूरा कंक्रीट फिल है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाले. नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल. लेट स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू सिग्मा S, स्ट्रेस इन कंक्रीट इज टू सिग्मा C. मॉड्यूलर रेशियो के हिसाब से सिग्मा S डिवाइडेड बाय ES is equal to sigma C divided by EC. This is the formula which we have derived or which we have seen earlier. Next. Now making some arrangement, sigma S is equal to ES into sigma C divided by EC. Substituting the value we get, and solving we get sigma S is equal to 15 sigma C. Now P is nothing but the total load. कॉलम पे या जो कंपोजिट एरिया पे या कंपोजिट सेक्शन पे जो टोटल रहेगा वो क्या रहेगा,
कुछ लोड स्टील पे रहेगा, कुछ लोड कंक्रीट लेगा, कुछ लोड स्टील बेयर करेगा, कुछ लोड कंक्रीट भरेगा। स्टील का है PS प्लस कंक्रीट जो लोड बेयर करेगा वो है PC। सो P इज इक्वल टू PS प्लस PC। अब PS क्या है? PS इज लोड ऑन स्टील। वो क्या होता है? स्ट्रेस ऑन स्टील, स्ट्रेस bearing capacity of steel into area of steel, plus sigma C, that is stresses or bearing capacity of concrete into area of concrete. Or you can say sigma S here is the stress on steel and sigma C is equal to stress on concrete. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। P दिया गया है 60 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा S इंटू 552.92 प्लस सिग्मा C इज इक्वल टू 1256.03। AS इज 552.92 और AC दैट इज एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट 1256.03। दिस इज इक्वेशन 2. Now we have two equation 1 and equation 2. Substituting the value of sigma S from equation 1 in equation 2, we get 60 into 10⁻³ is equal to 15 sigma C into 552.92 plus sigma C into 1256.03. Rearranging it and solving, sigma C is equal to 6.28 MPa. Substituting the value of sigma C in equation 1. Equation 1 क्या है? Sigma S is equal to 15 sigma C. Sigma S is equal to 15 into 6.28. So stresses on steel, sigma S is equal to 94.2 MPa or Newton per mm square. Thank you, student.